Bismillahirrahmanirrahim. Hope you are fine. In our previous lecture, we discussed about the anatomy of the respiratory systems. Now we start a new topic, the anatomy of the urinary system. The urinary system is also known as the renal system or urinary tract system. It consists of kidney, ureters, bladder, and urethra. The purpose of the urinary system is to eliminate the waste from the body. Urinary system is also one of the vital systems among the human body parts. The urinary tract is like a plumbing system. It drains the urine from the kidney and plays the important role in maintaining the homeostasis. A set of complex processes involved to maintain the balance of water, ions, calcium, and the blood pressure in the human body. This system also regulates the pH of the body. In this diagram, you can see the anatomical structure of the kidney. It's a reddish brown in color and have two covering the outer fibrous capsule and outer a dark reddish brown color. There is a fibrous capsule and in it there is a renal cortex, and between the renal cortex there is a renal medulla, and between the renal medulla there are different structures are present within the kidney. So our learning objective for our today lecture, we discuss about the importance of the urinary system, the component of the urinary system, organ associated with the kidney, and the gross structure of the kidney, and the microscopic structure of the kidney, and the blood supply of the kidney. Importance of the urinary system. As you know that the first most important function of the urinary system is formation of the urine. The urine which is formed by the urinary system, it contains the waste product from the metabolic process. It includes the nitrogenous waste compound like urea, uric acid, excess chyme, and the metabolic waste product of the drugs. The urinary system is also important to maintain and regulate the volume of water and the blood in our body, and also regulate the electrolyte concentration within the body. So it's maintain the homeostasis in our body. Another and most important function of the urinary system is production of the renin. The renin is an enzyme which is produced from the kidney. It regulates the blood pressure of our body. Its concentration increase and decrease to maintain the blood pressure in our body. Other important enzyme which is produced from the kidney is erythropoietin, which stimulate the RBC's production from the bone marrow. The metabolism of the vitamin D to form an active form is also occurred through the urinary system through the proximal convoluted tube (PCT). So these are the importance of the urinary system. Component of the urinary system. The urinary system is one of the excretory system of the body. It consists of following part: two kidneys which secrete the urine and perform all the function except the excretions. Two ureters, one from each kidney, which convey the urine from the kidney to the urinary bladder. After the ureters, the urine is stored in a urinary bladder, where the urine is temporarily stored until the excretion. And the other structure which is involved in urinary system is urethra, through which the urine is discharged from the urinary bladder to the excretors. So these are the organs which are involved in urinary system. Two kidney, from each kidney there is ureter, and after the ureter there is a temporary collection of the urine in the urinary bladder, and after the urinary bladder the urine is excreted out from the body through the urethra. The process by which the urine is secreted from the body is also known as the micturition. In this diagram you can see the two kidney, right and left kidney, and from the kidney there is then two passages known as the urethra which carry the urine, and after carry the urine from the kidney, the urine temporarily stored in the urinary bladders, and from the urinary bladder the urine is secreted from the
bladder through the urethra. Anatomical location of the kidney in human body. The kidney are reddish brown in color, present in a pair in abdominal cavity on either side of the spine in the retroperitoneal position, as you see in the diagram. The kidney is approximately present at the level of T12 and L3 lumbar vertebra. The right kidney is slightly lower than the left kidney because of the presence of the liver in the right side. The left kidney is little nearer to the medial plane than the right. Then there is in two axes of the kidney. The long axis kidney is directly downward and laterally and parallel to the lateral margin of the psoas muscle, the muscle which is present on the posterior sides of the abdomen. The kidney present in the abdomen as a mobile organ and vertically with the retroperitoneum on average 0.9 cm to 1.3 cm as much as the 4 cm during the normal respiration. This is the size of the kidney. Each kidney have the two surfaces, that is the medial surfaces, that is the posterior surfaces and the interior surfaces, and the two end, upper end and the lower end, and the two border, the medial border and there is an lateral border. From the medial border there is a point is also known as the hilum, where all of the kidney arteries and veins enter into the kidney. And we discussed about the right kidney is slightly lower than the left kidney because of the presence of liver in the right side. The kidney size is about 11 cm long, 6 cm wide and 3 cm thick and is about 150 gram in weight. The kidney is embedded in the retroperitoneal positions through a mass around the kidney. There is the fibroelastic renal fascia that encloses the kidney and the renal fat that embedded the kidney in their position. इट्स मीन किडनी के इर्द गिर्द एक फाइबर्स की कवरिंग होती है जो कि किडनी को अपनी पोजीशन में रखती है और इसको मोबाइल रखती है हमारे पास, ठीक है. यानी रेट्रोपेरिटोनियल जो कि हमारे पास इसकी पोजीशन है T12 से L3 लंबर वर्टिब्रा, इसमें किडनी के इर्द गिर्द एक फैट सी कवरिंग होती है हमारे पास जो इसकी शॉक एब्जॉर्प्शन से भी बचाती है हमारे पास और इसकी प्रोटेक्शन के तौर पर भी काम करती है. ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी. The kidney is present on other side of the vertebral column. The different structure which is present from the right kidney superiorly there is an adrenal gland, and the left kidney there is also an adrenal gland. So at the uppermost part of the adrenal gland there is yellow part is also known as the adrenal gland. From the right kidney in the interior there is present the right loop of the river duodenum and the hepatic flexure of the colon. And from the posterior side of the kidney there is a diaphragm and the muscle of the posterior abdominal wall, that is the psoas muscles. And from the left kidney there is anterior there is a spleen, stomach, pancreas, jejunum, splenic flexure of the colon, and the posterior side there is a muscle of the posterior abdominal wall, as you see in the diagram. From the interior view of the right and left kidney there is a different projection which is present on the kidney. On the posterior side of the kidney from the right and left there is a presence of the posterior abdominal muscle, that is psoas major muscle, quadratus lumborum muscles, and the transverse abdominis muscles. Gross structure of the anatomy. From the cross section of the kidney, the three distinct layers we can see from the kidney. The first outer fibrous capsule, that is the dark reddish brown in color surrounding the kidney, and the light reddish brown in color, that is the cortex of the tissue immediately below the capsule and outside of the pyramids. And the medulla, the innermost layer consisting of the pale conical shaped striation and the renal pyramid. So जब आप किडनी को हमारे पास क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स नज़र आती हैं, ठीक है. यानी आउटर इसकी फाइब्रस स्ट्रक्चर जो कि डार्क ब्राउन कलर की है, फिर लाइट थोड़ी सी रेडिश ब्राउन कलर की आपको आउटर
कॉर्टेक्स एंड फिर इनर मेडल्ला, उससे लाइट कलर, और इसमें डिफरेंट तरह के आपको स्ट्रक्चर्स डायरेक्शन से मिलते हैं. Then the other structure of kidney include hilum. On the medial side, on the medial border of the kidney, there is an sides where all of the renal blood vessels enter and leave the kidney. This position is also known as the hilum. Then the renal pelvis आ जाती है. So from the renal medulla, small projection are present within the kidney. All of these small projection collect and form a renal pelvis, a funnel shaped structure which is act as a receptacle for the urine formation in the kidney, as you see in the diagram. So in this diagram you can see the outer fibrous capsule, outer dark brown in color, and from the outer fibrous capsule there is an renal cortex, and then inner striation which is present, then the renal medulla, and from the medial side there is an projections where all of the renal artery and veins and enter into the kidney. There is an hilum, and from the hilum there is an swollen part of ureters, and this is known as the renal pelvis. Calces. Calces are the number of the distal branches called calces, which each of which surrounded the apex of the renal pyramids. In kidney, there is two type of the calces, the minor calces and the major calces. The renal pelvis is further divided into the small portion. It is known as the major calces, and the major calces further divided into the small calces known as the minor calces, where the collection of the urine present. Then the papilla. The urine formed from the kidney pass through the papilla at the apex of the pyramid into a minor calyces, then in the major calyces, and then enter into the urethra, as you see in the diagram. Renal papilla. Renal papilla are the small portion which is present within the renal medulla, where the collection of the urine is occur, and after the collection of the urine, the urine enter into the minor calyces, and from the minor calyces they enter into the major calyces, and from the major calyces it is entered into the renal pelvis, and from the renal pelvis the urine is entered into the ureters. Renal sinuses. The renal sinuses are the cavity within the kidney which is occupied by the renal pelvis. रीनल पैल्विस के साथ साथ छोटी छोटी सी जो कैविटीज़ पाई जाती है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर रीनल कैलसिस ब्लड वेसल्स वगैरह जो एंटर होती है, तो इसे हमारे पास क्या कहते हैं, रीनल साइनसिस कहते हैं. सो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द किडनी इज नोन एज द fibrous capsule, and from the fibrous capsule there is a renal cortex, and from renal cortex there is a renal medulla, and in renal medulla there is a small structure which is present within this triangle pyramid shaped structure which is known as the renal pyramid. And within the renal pyramid there is a small tube-like structure which is present known as the minor calyces, and from minor calyces divided into the major कैलिसिस आ जाते हैं हमारे पास. और जब यूरिन कलेक्शन हो जाती है मेजर कैलिसिस से हमारे पास रीनल पेल्विस में आएगा, रीनल पेल्विस से हमारे पास ये यूरिटर्स आ जाए, यूरिटर से ही हमारे पास हमारे नीचे यूरिनरी ब्लडर में कलेक्ट होगा, यूरिनरी ब्लडर से यूरिथ्रा से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है. यानी जो यूरिन बनेगा सबसे पहले हमारे पास रीनल मेडल्ला के अंदर जो स्ट्रक्चर मेजर और माइनर कैलिसिस है वहाँ पे बनेगा. जब मेजर और माइनर कैलिसिस में यूरिन की कलेक्शन हो जाएगी तो वो कलेक्ट होगा रीनल पेल्विस में जाएगा, और रीनल पेल्विस के बाद ये हमारे पास यूरिटर में, यूरिटर से यूरिथ्रा और यूरिथ्रा. फिर इसे अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे किसका हमारे पास रीनल कैलिसिस और पेल्विक सेल्स के असर, जो कि हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पाया जाता है. सो दिस इज द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द किडनी. The wall of the pelvis is also the smooth muscle and lined with the transitional epithelium. जो हमारे पास लाइनिंग है हमारे पास पेल्विस की वो स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं हमारे पास, ठीक है, और इसमें हमारे पास इसमें छोटे छोटे हमारे पास पेस मेकर टाइप सेल्स पाए जाते हैं जो कि इनकी मूवमेंट करवाते हैं हमारे पास, ठीक है. यानी यूरिन बनता है हमारे पास, मूवमेंट होती है यूरिन माइनर कैलिसिस से मेजर से हमारे पास रीनल पेल्विस में आएगा, तो वहाँ पे जो स्मूथ मसल है वो एज अ पेस मेकर के तौर पर एक्ट करते हैं, जो कि हमारे पास इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक. और इसी तरह हमारे पास यूरिन की
मूवमेंट होती रहती है हमारे पास, ठीक है, यानी कलेक्शन मेजर और माइनर कैलिसिस से पेल्विस से हमारे पास ये यूरेट्रा में रहता है। ये हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ स्मूथ मसल विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द पेल्विस। देन द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अब हम अगर किडनी को माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो हमारे पास तो एक 1 मिलियन ऑलमोस्ट 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट हमारे पास छोटे छोटे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं हमारे पास, एंड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। And the collecting tubule transport the urine through the pyramid to the renal pelvis and giving them their stripped appearance. Then the tubule is spotted by the small amount of the connective tissues, blood vessel and lymph vessel. यही है हमारे पास। अगर मेजर और माइनर कैलिसिस अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे हमारे पास नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है साथ में उनके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। यही कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, यूरिन को कलेक्ट करेंगे, यहाँ से पायरामिड्स में जाएंगे और फिर पायरामिड से आगे फर्दर कलेक्ट हो गए यूरिटर्स और फिर करेंगे नेफ्रॉन। द नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल प्योरिफिकेशन एंड द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। There are the two type of the nephron, cortical nephron that is responsible for the sodium reabsorption and the juxtamedullary nephron that is responsible for the reabsorption of the water. The name is given to the nephron according to their position in the kidney. The kidney, as we tell you about the there is in two portion of the kidney, adrenal cortex and adrenal medulla. The part of the nephron which is present in the adrenal cortex is known as the cortical part of the nephron, and the part of the nephron which is present in the medulla is known as the juxtamedullary nephron, which is responsible for the water reabsorption. As you see in the diagram, the renal cortex and the renal medulla, and in the renal cortex there is a collecting tubule. The part of the kidney the part of the nephron which is present in renal cortex is known as the cortical nephron, and the part of the nephron which is present between the cortex and the medulla is known as the juxtamedullary nephron, which is responsible for the water reabsorption, and the renal cortex which is responsible for the sodium reabsorption. Nephron. The nephron consists of the tubule closed at the one end and the other end opening into the collecting tubules, as you see in the diagram. The nephron is a tubulous structure which is closed at the one end and another end is open into the collecting tubule, and the collecting tubule which is entered into the ureters. The one end which is closed is form a cup-shaped glomerular capsule, Bowman capsule, which almost completely encloses the network of the capillaries known as the glomerulus. अब अगर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो इसका एक एंड बिल्कुल ब्लाइंड है हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल एंड है, और आपस में इनके इस तरह ब्लाइंड हो जाता है कि इसमें आर्टरीज आपस में मिक्सिंग अप हो जाती है हमारे पास। तो एक तो हमारे पास राउंड कप शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हमारे पास क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। द कप शेप स्ट्रक्चर बिटवीन द कप शेप स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कंबाइन बूमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, यानी कप शेप स्ट्रक्चर और इसके अंदर जो कैपिलरीज, आर्टरीज और कैपिलरीज वगैरह का जो जाल होता है इसे हमारे पास क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पलेसिस कहते हैं। इट्स कंटिन्यू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल रिमाइंडर ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये बन जाता है हमारे पास रीनल कॉर्पलेसिस। तो नेफ्रॉन के एक स्ट्रक्चर जो कि रीनल कॉर्पलेसिस है, बाकी जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो जो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है बाकी स्ट्रक्चर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो प्रॉक्सिमल कन्वल्टी ट्यूब्यूल, मेडुलरी लूप या फिर लूप ऑफ हेलने, और फिर डिस्टल कन्वल्टी ट्यूब्यूल इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। एज यू सी इन द डायग्राम, द रीनल कॉर्पलेसिस, द पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस and the Bowman capsule is combined known as the renal corpuscle, and this is the proximal convoluted tubule, and there is a descending a straight thick limb of the proximal convoluted tubule, and then enter into the medulla into the descending thin limb of the loop of Henle, and the ascending thin limb of loop of Henle, and the ascending thick limb of the convoluted tubule. Then the distal convoluted tubule, and the distal convoluted tubule is entered into the collecting tubules, and these collecting tubules enter into the minor calyces and pyramids, and the minor calyces major calyces, and from major calyces into the renal pelvis, and the renal pelvis is into the ureter, and from the ureter into the urethra, the ureter into the unibladder, and from unibladder into the urethra, and then urine pass out. So this is the process how the urine is travel from nephron structure kidney to into the urethra. में
इट इज़ रीनल कॉर्पोरेसिस है हमारे पास, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ फैन है, एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और फिर कलेक्टिंग डक्ट। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से जो हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नीचे को जाएगा इसे हमारे पास डिसेंडिंग प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कहेंगे हमारे पास, ठीक है। और इसका अपर पार्ट जो कि कॉर्टेक्स में है वो थिक है और जो कि हमारे पास मिजुल्ला है वो हमारे पास थिन पार्ट है। इसी तरह नेफ्रॉन का वो पार्ट जो कि हमारे पास अबव जा रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो कि अबव जा रही है हमारे पास, ठीक है। इन्हें हम असेंडिंग कहेंगे और जो पार्ट मेडल्ला में वो थिन है और जो हमारे पास कॉर्टेक्स में वो थिक पार्ट है हमारे पास, ठीक है। अब ये थिन क्या है, थिक क्या है, ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर है फॉर द डिफरेंट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स एंड द वाटर टेलियम। एंड देन ascending thick loop of Henle is converted into the distal convoluted tubule and distal convoluted tubule into the collecting tubules. After entering the kidney at the hilum is the medial surfaces of the kidney where all of the smaller arteries and where enter. It is when it is entered into the kidney is divided into the arteries and arterioles. In the cortex, an artery is known as the afferent arterioles. And the arterioles which is entered into the kidney is known as the afferent arterioles that is form the Bowman that is form a cup like or a cluster of the capillaries known forming the glomerulus. And the arteries which leave from the Bowman capsule is known as the afferent arterioles. Afferent arterioles as you see in the diagram. Renal artery is entered into the kidney. It form afferent arterioles and afferent arteriole form the Bowman capsule, from the glomerulus, the network of the capillaries, and after when it is leave the Bowman capsule, it's converted into the efferent arterioles and efferent arterioles into the capillary network supplying the nephron and then into the renal vein. It's mean the arterioles which is entered into the Bowman capsule is known as the afferent arterioles और वो हमारे पास arterioles जो कि हमारे पास लीव करती है, जो कि हमारे पास Bowman capsule से निकलती है हमारे पास, इसे हमारे पास कहते हैं efferent arterioles. The blood pressure in the glomerulus is higher than the capillary from the other part of the capillaries of the nephron because the diameter of the afferent arterioles is greater than that of the efferent arterioles, ठीक है। यानी जो हमारे पास डायमीटर वुमेन कैप्सूल के अंदर जो हमारे पास एफरेंट आर्टियोल्स है वो हमारे पास डायमीटर ज़्यादा है, इसकी वजह से इनका वहाँ पे ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। और वो आर्टियोल जो कि लीव करती हैं फ्रॉम द वुमेन कैप्सूल से, इनका हमारे पास डायमीटर कम है तो इनका ब्लड प्रेशर भी वहाँ पे कम होगा हमारे पास, ठीक है। सो द वुमेन कैप्सूल्स के अंदर जो हमारे पास फिल्ट्रेशन है वो हमारे पास ज़्यादा होगी हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा द वॉल ऑफ द वुमेन कैप्सूल जो होती है वो हमारे पास सिंगल लेयर होती है हमारे पास, ठीक है। और फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से इनकी परमेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। एंड देयर इज़ अ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है हमारे पास, ठीक है, थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट परमिट द कंट्रोल ऑफ द रीनल ब्लड वेसल डायमीटर एंड द ब्लड फ्लो। In the diagram you can see the efferent arterioles which is entered into the Bowman capsules आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। and it's further divided into the different small network of the capillaries where the different exchange of the gases is take place. And the arteries which leave the Bowman capsule is known as the afferent arterioles. And the network of the capillaries which is present around the loop of Henle is known as the vasa recta. So this is the overall blood supply of the kidney. The first of all is the renal artery. The renal artery is further divided into the segmental arteries. As you see in the diagram, the first renal artery is entering into the kidney is divided into the segmental artery, and the segmental artery is further divided into the interlobular and artery. Interlobular artery is further divided into the arcuate arteries, and arcuate arteries divided into the interlobular arteries, and the interlobular arteries divided into the afferent arterioles, and the afferent arterioles into the Bowman capillaries, and then passing out from the Bowman capsule it is entered into the efferent arterioles, and efferent arterioles from the paratubular capillaries, and from paratubular capillaries the interlobular vein and arcuate veins, and the interlobular vein, segmental veins, और फिर renal veins। यानी वो सारी आर्टरीज हमारे पास, ठीक है। यानी जैसे ही लीवर में जैसे ही किडनी में ब्लड एंटर होता है हमारे पास, ठीक है, यानी सबसे पहले रीनल आर्टरी से आगे जाके ये
छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, सेगमेंट से ये इंटरलोबुलर छोटे छोटे लूप्स में डिवाइड हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। फिर एक आर्च बन जिसे आर्कुरेट आर्टरीज कहते हैं। फिर आर्कुरेट आर्टरी से हमारे पास दो लूप्स के दरमियान जो ब्लड सप्लाई करेगी हमारे पास, ठीक है, किडनी के अंदर, वो इंटरलोबुलर है। और फिर इंटरलोबुलर से ये हमारे पास वुमन कैपिटल से तो ये हमारे पास एफरेंट आ जाएगी। और फिर वहाँ पे जाके एक नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज बन जाएगा। और फिर वहाँ से ये इफ्रंट में, और फिर उसी तरह बैकअप जो ब्लड सप्लाई वेन के थ्रू वापस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी पेरिटेबुलर से इंटरलोबुलर, इंटरलोबुलर से जैसे ब्लड जा रहा है वैसे ही वापस आ जाएगा। आर्कुरेट से इंटरलोबुलर, सेगमेंटल, और फिर रीनल वेन्स के ज़रिए से। और रीनल वेन्स हमारे पास ये इंफीरियर वेना कावा में जाएगी हमारे पास, और इससे ब्लड हमारे पास लेफ्ट राइट साइड ऑफ द किडनी में जाएगा। So this about the overall structure of the kidney. Thank you. For any query, contact at this number.